Hello guys, welcome you all to the WACA series, weekly activity-based current affairs. So today we will discuss the current affairs news related to economy from 1st to 7th August. Myself Ankur Tripathi. Why WACA? We have launched this initiative because by reading newspapers we are not able to consolidate our news properly and procrastination happens. So हमारी news एक जगह पे आ नहीं पाती है. And then what we do, we take the help of monthly magazines where the news is quite late, their relevance in our mind fades away and we are not able to comprehend and consolidate it properly. So in our WACA initiative, what we do, for you guys, we segregate the news for the week and put it into subject-wise compartment. And each day, like on Monday, environment and security, Tuesday, polity and governance, Wednesday, society and culture, Thursday, science and technology and international relations, on Friday, economy. We present to you with PDFs. Weekly consolidation happens, and then what we will do, we will present you with one mains question along with the presentation and you can answer it and उसको discuss करेंगे एक video के साथ with MCQs. And after one quarter, you will get a compilation of all the PDFs and you can do quarterly revision. So this series is going to benefit you a lot. Keep watching it. Yes, in the news, we have collected the news from various newspapers, PIBs, government sources, and compiled this, the economic section. Let's begin. The first topic is government reviews financial and operational reforms in regional rural banks. First of all, understand what is regional rural banks. In our rural areas, there is 66% population which lack literacy, जहां पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, उन तक क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरआरबी एक्ट 1976. Okay, region. Why region? Because regional people are local people. They understand the local needs. Here the banks show a tendency of cooperative banks where local needs are understood by the banking employees, banking correspondents. Plus, they are sponsored by national banks. So, professionalism is also there. Okay, why it is the news? To make RRBs financially sustainable because they are going into losses. We will understand why the losses are occurring. The government has asked RRBs to move towards digitization. उनको अपने records digital रखने चाहिए. किसको loan दिया है उसका एक ledger maintain होगा. So that from centralized server it can be find out which loans are coming at what time. Which sector is performing well, which sector is performing not well, from where the NPAs are incurring, and expand their credit base. पहले credit base समझो. Credit base is means to what different sectors the bank has given the loans. For example, agri sector, housing sector, education, health. Okay, what happens? Most of the agriculture loans are not being repaid. So the government has asked to widen their credit base to MSMEs, micro, small and medium enterprise sector. First of all, they employ a lot of people and they are able to repay the loans by earning a lot of profits also. Okay, अब आते हैं प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, रीजनल रूरल बैंक्स के. It was formed on the recommendation of नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975. ये चीज याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट. Under the RRB Act, it was established as the credit facility to the rural areas. Now, credit facility देनी है, but what happens because providing credit facility, the bank wants it back, and unless and until that person earns profit on it, the person cannot pay back the loan. तो कैसे होगा? फिर जो areas like agriculture, housing, education, ठीक है, health, they require funding. They are our priority areas. तो RBI has mandated regional rural banks priority sector lending. They have to invest their working capital into 75% of priority sector lending. 75% of the loans they have to give to the priority sectors. Okay, whereas for commercial banks priority sector lending कितना है? 40%. ये चीज याद रखनी है. Regional rural banks, cooperative banks, small finance banks, for them the priority sector lending is 75%, whereas priority sector lending for
commercial banks, scheduled commercial banks is only 40%. Okay. Now we'll understand the equity structure of RRBs. 50% is of central government. Capital share of central government is 50%. State government it is 15%, and 35% by sponsor banks. Sponsor banks are, most of them are scheduled commercial banks like SBI, HDFC, UBI, PNB. ये बैंक्स स्पॉन्सर करते हैं अपनी एक ब्रांच को आरआरबी में. Okay, 35% equity is held by sponsor banks. Now let's understand what are the issues in RRBs. They are incurring losses. Many of the branches do not have enough business because most of the people are not educated, not aware about this credit lending facility. They do not take the benefits out of the loan. What these banks are doing, they are employing a lot of staff, lot of costs they are incurring, and they are implementing government schemes like direct benefit transfer in the rural areas. So they are not being very productive. Loan delinquencies. RRB's loan recovery rates have declined over the years, resulting in a large overhang of NPAs. NPA क्या है? Non-performing asset. इसकी बहुत क्लासिफिकेशन है. They are classified into 4 groups. ठीक है? SMA1, SMA2. Okay, will not go into that depth. NPA simply means if the loan's due date of recovery is passed by 90 days and the loan has yet not been received, that is called as non-performing asset, NPA. Okay. Lack of unity of command. What is happening? Through this equity structure, we can see that even the central government is commanding the RRBs, state government is commanding the RRBs, and sponsor bank is also directing the protocols to the RRBs. Three bodies are governing the RRBs. Hence, there is no unity of command as they are controlled by various agencies. Moreover, NABARD acts as refinancing agency and regulator. So NABARD is also dropping certain protocols that must be followed by RRBs. तो इसमें क्या हो रहा है कि RRBs are not able to function efficiently. वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे पूरी तरीके से because उनकी reporting different agencies को है. These are the examples, certain examples like Maharashtra Gramin Bank, Punjab Gramin Bank, because they are rural, regional banks, so their name is started with the name of the state also. ठीक है? तो government, these are the issues. This is about RRBs. अब हम कर क्या सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप डिजिटाइजेशन कीजिए एंड क्रेडिट बेस को बढ़ाइए. इट मींस दैट वी हैव टू ब्रिंग सम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस. Just like scheduled commercial banks, we have to bring certain core banking solutions into our RRBs. Okay, hope you understood this topic. Now let's move to the next. 5G spectrum allocation ends with record bids of over 1.5 lakh crore. Okay, 5G spectrum. 5G spectrum. This topic touches the 3 different topics in our subject. One is science and technology. What is 5G spectrum? Which bandwidth we are talking about? ठीक है? Another is economy. Like how it is going to empower our digital infrastructure in economy, health infrastructure, education, all the sectors, e-governance, digital platform, so economy. And third is governance. It is a resource. 5G spectrum is a resource, and how we are going to allocate it in a most efficient manner so that it leads to better governance. तो तीनों जगह पे इस टॉपिक का यूज है. ठीक है? It's a very wide topic, 5G spectrum. So it has been auctioned recently, and we have got very high bids, almost double the auction of 4G bidding, and ends with record bids of over 1.5 lakh crore. ठीक है? Why it is in the news? Because first ever auction of 5G
has been concluded where Jio Enterprise emerging as the top bidder. Okay, but what you have to understand कि ऐसा नहीं है कि Jio को ही सारा मिल गया है, ठीक है. Apart from that, Airtel is also there, ठीक है. Even other telecom players are there. Now let's understand about the spectrum. This spectrum relates to the radio frequencies allocated to mobile industry. These are the telecom operators. For them it is allocated, and other sectors of communication over the airwaves. ठीक है. These airwaves are called spectrum. ठीक है. I know इसको समझते हैं अभी. ठीक है. And subdivided into bands that have varying frequencies. See, the radio waves is like this. These are the different frequencies. Like this is your 1G, this is 2G, here somewhere it is 5G. As we go upwards, our frequency increases. The more the frequency, the faster the speed, and small the wavelength. Fine? Varying frequencies. 5G technology uses both low frequencies and high frequencies. This uses both high frequencies and low frequencies. Three key spectrum frequencies for 5G are required as 1 gigahertz, 1 to 6 gigahertz and above 6 gigahertz. Now understand. ठीक है. From low, mid to high. 6 gigahertz frequency is very high. It is used for cloud computing, Internet of Things. Okay. 1 gigahertz and 1 to 6 gigahertz used for communication. Now, what is the need for spectrum allocation? Because it is a resource for the government. The union government owns all the publicly available assets within the geographical boundaries of the country. And this broadband, this bandwidth is a resource. Airwave is a resource for government of India. ठीक है. Include the airwaves spectrum. Most of the radio spectrum is reserved in countries for the defense. हम अपने डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व करके रखते हैं. बाकी जो होता है उसको हम पब्लिक यूज के लिए दे देते हैं. ठीक है. Following an increase in the number of phone users and new services. Now the number of phone users have increased, and moreover new services. Digital India has brought new services where a lot of high speed is required. Digital education we have already covered in social issues. How much is the requirement for filling the digital gap, digital divide in India? Countries started auctioning frequencies to the telecom companies. Okay. Now the point is, इसकी ऑक्शनिंग ही क्यों करते हैं? ऐसे ही क्यों नहीं दे देते? Because just like coal, इसके कॉन्सेप्ट को समझो. Just like coal, air waves is also a resource. Like 2G scam, Colgate scam. This 5G is not a scam here. Its auction has been done in a proper bidding manner. So we have done some good governance because government has got very high bids here. Okay. So it is going to welfare or citizens in some or the other manner. Government is going to spend this money in the country. Okay. So 5G spectrum का auction हो गया है. Fine. The next topic is jute crop has fallen by over 13% in the past decade. Okay. Jute crop. We have all heard that from jute crops, gunny bags are being made, mats, carpets. Okay. And for that, actually, government is providing agricultural subsidy in the form of MSP. Jute crop पे MSP है, prelims के लिए याद रखना है. And why government is providing MSP and subsidy on jute crop? Because it is directly or indirectly employing more than 40 lakhs of families. It is giving employment to them in the rural far-flung areas. Okay. The news is the Ministry of Agriculture stated India's jute production declined to 1.77 million tons in 2021-22 from 2.03 million tons in 2011-12. अब यहाँ पे point note करने वाली बात है. Now from here you can get a direct question into prelims like statement 1. Jute production has consistently increased in the last decade. Statement 2.
although the MSP has increased but jute's production has declined. Statement 1 is jute production has consistently increased in the last decade. Statement 2 is although the MSP of jute has increased but jute production has declined in the last decade. Comment box में बताओ which is the correct statement. Only one, only two, both 1 and 2 or none of the above. Okay. Now let's understand about jute crop. It is known as golden fiber. Golden fiber इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गोल्डन कलर का दिखता है पहले तो. It is long, soft, shiny, natural fiber used in many textile applications. It is 100% biodegradable. It is environment friendly. ठीक है. अब इसके आते हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस. लाइक कॉटन यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉटन की उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए उसके ग्रोथ के लिए. फॉर जूट requires a humid climate with a temperature between 24 to 38 डिग्री सेल्सियस. इसको याद रखना है 24 to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए एंड मिनिमम रेनफॉल ऑफ अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर. फाइन. एलुवियल सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए. एलुवियल सॉइल. द हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड असम. स्टेप्स टेकन फॉर जूट इंडस्ट्री. अब क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हमारा जूट प्रोडक्शन कम हो गया है तो स्टेप्स टेकन फॉर जूट इंडस्ट्री क्या है. मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल्स. ओके. 100% पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ शुगर. फूड ग्रेन्स क्या हुआ, लाइक पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना भी हमारा ग्रेन्स पैक हो रहा है लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, उसमें 100% पैकेजिंग बाई जूट गनी बैग्स and 20% of at least sugar should be packaged in jute bags. Golden fiber revolution. Because जो हमारा जूट है ना उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है. We'll talk about it कि कॉस्ट क्यों बढ़ा है. तो नाइलॉन, सिंथेटिक फाइबर, most of the people are buying it because of its long durability. तो हमको जूट को लेकर के आना है because it is biodegradable whereas nylon is not biodegradable. So we have launched golden fiber revolution. ठीक है. And simultaneously you should also study about textile missions. इकोनॉमी के सिलेबस में लिखा हुआ है मिशंस, टेक्निकल मिशंस एग्रीकल्चर में. ठीक है. जूट जियो टेक्सटाइल. जूट जियो टेक्सटाइल कैन बी यूज. टेक्सटाइल मतलब इट्स मोर लाइक अ फाइबर. इट कैन बी यूज इन योर सिविल इंजीनियरिंग, in covering the banks of the river. Okay, so this is our technical mission along with golden fiber revolution. Jute mark India logo for authenticity of jute products. This is a very good initiative. कल को जाके हम अपने स्पेशल किसी लोकेशन के जूट को जीआई टैग भी दिलवा सकते हैं, geographical indication tag. This is the first step in its making. Jute I care for using certified seeds, adopting scientific techniques for high quality of production. जहां पे भी जूट हो रहा है वहां पे प्रोडक्शन और इंक्रीज की जा सके. अब एक चीज समझते हैं कि वाई दिस हैज डिक्लाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ इट बट वी कैन असेस द रीजंस बिहाइंड इट. नंबर 1, increase in the cyclones, frequency of cyclones in the eastern coast. So jute crops get destroyed. Number 2, the procurement cost See, location of jute industries is a question of economic geography paper 1. वो भी एक बार देख लेना है मैप में. ठीक है. Procurement cost of jute is more than the selling price or the MSP on which the farmer is selling. Okay. Procurement cost क्यों ज्यादा है? बिकॉज जहां पे भी जूट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, फार्मर्स हैं जहां पे, और जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन इज फार अवे. लॉट ऑफ डिस्टेंस इज देयर बिटवीन इंडस्ट्री एंड फार्मर्स. फार्मर्स वहां पे एमएसपी पे बेच देते हैं, दे आर नॉट गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इट. वेयर एज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इसके बीच में बहुत सारे आते हैं मिडिल मैन. दे प्रोक्योर फ्रॉम लॉट ऑफ फार्मर्स एंड देन सेल इट टू इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्री का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बहुत हाई है देन व्हाट फार्मर इज गेटिंग. अभी तो बैग्स आ गए हैं बहुत सारे. H&M में यू कैन सी लॉट ऑफ ड्रेसेस आर कमिंग बट दे आर वेरी कॉस्टली डिस्पाइट बीइंग दे आर मेड अप ऑफ जूट, है ना.
तो इसका सेलिंग प्राइस जो इंडस्ट्री को पड़ रहा है वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है. सो पीपल आर नॉट प्रेफरिंग इट बिकॉज इट्स नॉट वेरी ड्यूरेबल. सो दीज आर द टू रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन. और इसके लिए हम ये टेक्निकल मिशन लाके काम कर रहे हैं एंड जूट क्रॉप को प्रमोट कर रहे हैं. फाइन. Revamped distribution sector scheme. Okay. Revamped distribution sector scheme is related to power sector. GS3 energy infra. Okay. अभी हमको डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को, हमारे सबके घरों में होता है कि लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, लाइट जा रही है. कभी कभी रूरल एरियाज में लाइट की टाइमिंग फिक्स होती है कि 4 घंटे 8 घंटे ही आएगी. सो अभी क्या हो रहा है कि वो कैसे हम उसको और इफिशिएंट बनाएं, उसके लिए वी हैव टू रीवैम्प आवर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज दिस स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड. उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं. इट इज रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट्स लिंक्ड स्कीम. Okay, certain reforms will be taken. We will see what reforms are going to take, and results linked. We have our targets aimed at improving operational efficiencies and financial sustainability. अभी इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज क्या होती है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पावर स्टेशन. यहां से पावर जाती है अप ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर बहुत सारी दूर दूर एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. एंड देन फ्रॉम देयर इट गोज टू डाउन ट्रांसफार्मर. फ्रॉम हियर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडस्ट्रीज, हाउसहोल्ड्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. डिफरेंट सेक्टर्स यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. यहां पे पावर प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एंड इट इज रीचिंग टू अल्टीमेट कंज्यूमर. दिस होल कॉस्ट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल इफिशियंसीज. अब यहां पे हमारे लॉसेज नहीं हो. लॉसेज मींस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज. यहां से यहां तक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें लॉस को कहते हैं एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज. इस लॉस को रिड्यूस करना है बिकॉज कहीं पे पोल वर्क नहीं कर रहा है, कहीं पे वायर टूट गई है, उस चीज को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बिल्ड करना है. ठीक है. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मींस कई बार इन लाइंस पे हम मीटर नहीं लगा पाए, तो हमको वहां से कॉस्ट प्राइस मिल नहीं पा रहा है. जितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उतना पैसा वापस आ नहीं रहा है. कुछ कंज्यूमर्स नहीं पे कर पा रहे हैं टाइमली. सो फाइनेंशियली इट इज नॉट सस्टेनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मच इलेक्ट्रिसिटी. तो हम उसके कैसे पैसा और ले आ पाए. ठीक है. सो दिस स्कीम हैज एन आउटले ऑफ ओवर 3 ट्रिलियन. ठीक है, 3 लाख crores, and will be distributed over a period of 5 years from 2021-2022 to 2025-2026. ठीक है. इसमें से भी just remember this, 60% will be used for reducing losses and 40% will be used for strengthening the infra. ठीक है. Now who will be executing, who will be looking after it? Nodal agencies कौन है इनकी? REC रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन एंड PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ये चीज बहुत सिंपल है याद करने के लिए भी. देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमको रूरल एरियाज में ही प्रॉब्लम है, तो रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन होगा ही वहां पे. एंड पावर सेक्टर की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा. इसको याद कर सकते हैं, प्रीलिम्स में कुड बी अ क्वेश्चन. ठीक है. Who are the, what will be covered into it? Which discoms will be covered into it? All state owned discoms. Remember this, no private sector, no private discoms. Private discoms को cover नहीं कर रहे हैं इसमें. Only state owned discoms will be covered, are eligible for financial assistance under RDSS. It is also proposed to provide 10 crore smart prepaid meters all over the country. This becomes a little bit of criticism also for this scheme because in the rural areas, hinterlands, low income group people cannot afford smart prepaid meters. Prepaid, we should have here पोस्ट पेड मीटर्स. बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो उसके साथ 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए करके वो अपना इसका बिल पे कर सकते हैं. बट पहले ही अपफ्रंट कॉस्ट इतना दे पाना मीटरिंग का उनके लिए पॉसिबल नहीं है. सो मोस्ट ऑफ पीपल मे बैक आउट फ्रॉम द स्कीम. ओके, बट याद रखेंगे इसमें प्रीपेड मीटर्स हैं, पोस्ट पेड मीटर्स नहीं है. ओके, बिफोर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द RDSS. As we have discussed, reduce aggregate technical and commercial, इसको AT&C losses भी कहते हैं. जो यहां से प्रोडक्शन से लेकर के सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन तक जा रहा है, उसको लॉसेस को रिड्यूस करना है across discoms
to 12 to 15%. ये टारगेट भी याद रखेंगे. Right now it is around 37% loss. And reduce the gap between average cost of power supply and average revenue realized to zero by year 2025. Average cost of power supply क्या होगा? Power production from power station to distribution. This is called cost of power supply. And average revenue realized, what the consumer is paying is called the average revenue realized. अगर उन दोनों का नेट डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा इस सेक्टर में. ओके, उसको जीरो कर देना है हमको. अब नाउ अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट. पार्ट ए, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम. फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? कुछ पैसा उनको डिस्काउंटेड वे में हम प्रीपेड मीटर्स दे देंगे, 200-500 रुपए कम दे देंगे, ठीक है. And upgradation of the distribution infrastructure. This 40% fund is for upgradation of infrastructure, including segregation of feeders. Important है ये point. Segregation of feeders for agriculture purpose. क्या होता है कि agriculture, most of the subsidy in discoms goes to agriculture sector. तो अब इनके feeders को अगर हम अलग कर देंगे तो we can know exactly how much subsidy the government is giving, how much household and industries are performing well. ठीक है. And moreover that, schemes like Kusum, like solar feeder we can put, renewable energy can be trapped, different feeders लगाने का ये फायदा होगा. Part B, training, capacity building and other enabling support activities. थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे. क्या मॉडर्नाइज करेंगे? जैसे एक सॉफ्टवेयर है SCADA, that can be used. वो मॉनिटर कर सकता है कहां पे पावर लोड, वोल्टेज लोड ज्यादा होता है, किस टाइम पे ज्यादा होता है, तो उस समय उन लाइंस में हम ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं. कहां पे कम हो रहा है, कहां पे डार्क एरियाज हैं, तो उसको मॉनिटर करके थ्रू अ सॉफ्टवेयर वी कैन डू दैट वर्क. फाइन. एक चीज और समझने की बात है फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम द आउटले ऑफ 3 ट्रिलियन 60% इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस. अब लॉस हो क्यों रहा है? लॉस इसलिए हो रहा है कि लोग जो है, पहले तो हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ठीक है, और लोग पैसे नहीं दे रहे हैं. तो इस लॉस को कम करने के लिए हमको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. रादर इट शुड हैव बीन 60% मोर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 40% फॉर द रिड्यूसिंग लॉसेस. जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे तभी तो हमारे लॉस कम होंगे. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये क्या है? इट इज मोर लाइक अ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड है. हाउ इट वर्क्स? लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट. फॉर एग्जांपल, you want to invest in some big project, some road project, big project, okay, or some building project, and you have rupees 5 lakhs, okay. With 5 lakh you cannot invest into it. Only big players can put their money there, okay. So what it is, how it is a mutual fund? You will pool a lot of money. हम बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे और उसको इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे. It is regulated by SEBI, so that even small investors, diverse portfolio of investors can invest their money into infrastructure. Now you can understand ki why there is need for this pooling of money. So much people can invest money because first of all, it has to be regulated by SEBI for safeguarding their interest, because government does not have lot of funds to spend in infrastructure, and we with infrastructure increasing, the scope of economic development also increases manifolds. तो क्या करते हैं हम? दूसरे लोग का पैसा इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट लगाती है और जो रिटर्न्स आते हैं that will be given back to them, okay. This is called crowding in effect. Pooling money from private sectors and investing into big projects and then giving back them their returns. Now let's understand. It is an investment scheme that allow investment from individuals and institutional investors. Big institutional investors can also invest. Individuals can also invest little sum of money in infrastructure projects to earn a portion of income as a return. Okay. It is a part of government's plan to tap alternative source of financing. Okay, the government is also already financing what it can. हमारे ऊपर fiscal deficit already बहुत ज्यादा है, ठीक है. To boost public spending in roads
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेट्स क्या है? प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल, यू कैन इन्वेस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, small time, even you can have like 1 lakh, 2 lakh, 250 crores of investment. Generation of specialized OM, operations and maintenance concessionaires, okay, expected to attract long term investors. तो इन्वेट्स का ये बेनिफिट मिलेगा कि पब्लिक की मनी पूल करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं और रिटर्न दे देंगे उनको। द नेक्स्ट टॉपिक इज उद्यम पोर्टल। इट इज ऑफ MSME। MSME के साथ क्या है? दे हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन टू MSME पोर्टल इटसेल्फ। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उनको एक GST पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, GSTN नंबर लेकर के टैक्स भरने के लिए, इनकम टैक्स भरना पड़ता है, डिफरेंट स्कीम्स में रजिस्टर करना पड़ता है स्कीम के बेनिफिट्स लेने के लिए। इन सबको कंबाइन कर दिया गया है उद्यम पोर्टल में, ठीक है। They have to just put their Aadhaar card and register on Udyam portal. They will be eligible for all these things. इसके डेटाबेस को लिंक कर दिया है GST के और इनकम टैक्स के डेटाबेस के साथ। Different schemes are there like TREDS, Aspire, Sarrthi, okay, इन सारी स्कीम्स का डायरेक्ट उसको बेनिफिट मिलेगा MSME को। It is launched for voluntary registration of MSMEs to avail benefits of the Ministry of MSME schemes and priority sector lending। अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर में MSME कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए भी उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स इज दिस स्कीम इज वॉलंटरी, नॉट मैंडेटरी। दिस स्कीम इज नॉट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, इट्स अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। MSMEs are identified on the composite criteria of investment and annual turnover. Different classifications are there. It is fully digitized and registered MSMEs is issued on उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक मिल जाता है और उनको उनका डेटाबेस जो है ऑलरेडी लिंक्ड है इनकम टैक्स के साथ और GST के साथ। फाइन। लाइबोर, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ओके, लाइबोर इज द ग्लोबल रेफरेंस रेट फॉर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन द इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। होता क्या है कि बहुत टाइम पहले 1980s में ही स्टार्ट हो गया था, बट 2008 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया लाइबोर, जब हमारा क्राइसिस हुआ था, सोवरेन बॉन्ड क्राइसिस इन US, ठीक है। दिस बैंक इंटरबैंक ऑफर रेट करता क्या है? ये मॉर्निंग में दिस इंस्टीट्यूशन इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आस्क्ड डिफरेंट बैंक्स ऑफ डिफरेंट ग्लोबल रीजन्स कि टुडे एट व्हाट इंटरेस्ट यू वुड लाइक टू गिव मनी टू द कस्टमर्स। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो देना चाहते हैं तो वो क्या करता है, टॉप के जो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट बोलते हैं उनको हटा देता है, बॉटम के जो बहुत कम लोग बोलते हैं उनको हटा देता है और एक एवरेज मीडियम को मेंटेन करता है कि इतने इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड रहेगी, एक स्टेबल रेट पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स व्हाट दे डू, लाइबोर से +2% इंटरेस्ट रेट पे एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं पैसा। फाइन। It acts as a benchmark for short-term interest rates and is used for currency rate swaps and mortgages. Every day it is updated. Administered by ICE. It is computed for 5 currencies: Swiss franc, Euro, Pound, Sterling, Japanese yen and US dollar. ठीक है, ये 5 currencies हैं. And it is indicator of the health of the financial system and provides an idea of the trajectory of the impending policies. डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी रेट से भी हम इसको रिलेट करके जान पाते हैं कि ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। कंज्यूमर जब सेंट्रल बैंक की पॉलिसी चेंज हो रही है, पॉलिसी अगर डाउन जा रही है तो हमारा जो बैंक्स हैं वो पैसा ज्यादा देना चाहते हैं या कम देना चाहते हैं, ये ट्रैजेक्टरी भी हम यहां से समझ पाते हैं। इसी का इक्विवेलेंट इंडिया में है माइबोर, ठीक है। इट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। वी आस्क इंडियन बैंक्स एट व्हाट इंटरेस्ट रेट दे वांट टू गिव मनी एंड देन वी कैलकुलेट आवर माइबोर। नाउ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ये एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। यू कैन सी दिस डायग्राम। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड बिल, मोबाइल बिल, वाटर बिल, DTH, एवरीथिंग कैन बी पेड ऑन भारत बिल पे। ये 2015 में लॉन्च किया गया था। वाई इट वॉज लॉन्च? बिकॉज होता क्या है कि सब जगह के सेक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल BSES यमुना बैंक, ओके, you want to pay your electricity bill, somebody is paying with cash, somebody with UPI,
somebody Aadhaar enable, somebody is paying from card, debit, credit card. So how to monitor everything that is coming at one point? Moreover, for customers, it was difficult to pay electricity bill at different point, gas bill at different point. Now it has been organized from back end and front end, uh, for the receiver side and for the consumer side at one platform. This is called Bharat Bill Payment System. इसमें एक चेंज लाया गया है. The change is the Reserve Bank of India allowed the BBPS to process cross-border inbound bill payment. पहले बाहर के लोग यहाँ का बिल नहीं पे कर सकते थे. Until now, BPS was accessible only for residents in India. Now, the residents outside India can pay the bills in India. This move is expected to benefit senior citizens. अगर किसी के बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, they are earning from there they can directly pay the bills, dependent on the children or family living overseas. Okay. Okay, this was for today, and our running courses are Atmanirbhar Bharat, Atmanirbhar 2023. You should also become Atmanirbhar. Starting from 29 August, price is 14,999 with a 10% discount. Upcoming courses, MMP 2023 batch 2 and MMP plus 2023 batch 2. Live CSAT classes will be there also. Okay guys, thank you. This is all for the economy this week. We'll meet up next week also.